So your full name is Gellert Ghost Gellert Grindelwald. Grindelwald. Actually, Grindelwald. Ghost. Yeah, Ghost is my nickname, or like Okay, Ghost is your Stage nickname name and type. I got it from my military academy. okay. Have you done undercover anyways? No, sir. I'm retired. Okay. Early retired. So you're ex military. Yeah, military staff sergeant. Okay. मैं रिसेप्शन पे खड़ा होता हूँ, अगर कोई आता है तो लेकर टर्न फोर। ठीक है। तो आपने कभी पुलिस किया है या फिर सिर्फ मिलिट्री में आप सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट फर्स्ट टाइम से? कोऑप ऑपरेशन में थे हम बहुत बार। ओके। तो हम लाइक मुझे पता है, आई नो। Okay. So you're familiar with the PD stuff and PD rules and everything. Sure. Okay, so on that basis, I'll ask questions on other SOP stuff. Okay. Okay, just give me 1 minute. Hello chat. What's up? Okay, so I'm gonna start with the basics of PD. So can you tell me the slogan for the PD for the state we use to protect the city? Actually, sir, the PD slogan I didn't know, but the military I know, because PD actually base पे मैंने start नहीं किया था कभी। ठीक है, तो आप मिलिट्री के बारे में क्या था आपका मिलिट्री का? हम लोग था we can give your blood for anything. We can give you our blood for anything. Anything. Okay. Okay, तो आप पीडी से आप बहुत कम फेमिलियर हो? पीडी में कभी आपने Yeah, पीडी के like साथ कोऑप ऑपरेशंस ही किए हैं, बाकी आप कभी पीडी का हिस्सा नहीं थे, राइट? no. ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोले कि आप एक न्यू रिक्रूट हो एज अ पीडी, तो वो गलत नहीं होगा, राइट? Yeah. ठीक है, तो फिर आपको मैं एसओपीज एंड ऑल वो सब सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपको पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। बट अभी के लिए मैं आपसे वो पूछूंगा जो आपको मिलिट्री में सिखाया गया होगा, या फिर जो बेसिक एक एक पर्सन को पता होना चाहिए जो एक सिटी में रह रहा है, तो उस टाइप के सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एंड क्या क्या ऑपरेशंस आपके हुए जो कि पीडी के साथ थे। मेनली मुझे वो जानने हैं, बाकी चीजें बाद में। Okay, sir. So the first thing, sir, I was a normal officer in military. After that, there was some kind of missions. I can't tell you right now. I did it, and ओके। उसके बाद after 5 years I got promotion. Then promotion के बाद मैं बना staff surgeon. And after that हम लोगों ने एक secret mission पे गए थे for Afghanistan. So we did like suppress some terrorist and everything kind of. तो उसके बाद मैंने रिटायरमेंट लिया। वो रीज़न आपको आई गेस सो मेरे सीवी में दिख जाएगा। आई कांट लाइक डिस्क्लोज इट राइट नाउ। ओके। सो देन उसके बाद रिटायरमेंट के पहले लाइक वी गॉट कोऑप ऑपरेशन विथ आवर पीडी डिपार्टमेंट। तो उधर पे हम लोगों का था सिटी में लाइक देयर आर मेनी काइंड ऑफ क्राइम्स जिसमें नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं थे। देयर वाज सम माफियाज and armed mafias. Okay. So that time our head he was ordered to join them. उस टाइम पे हम लोगों ने लाइक हमारे साथ ईएमएस भी थी। So gun shoot and everything happened. So after that that was 1 or 2 days kind of an operation. So after that मतलब मेरे को लेना पड़ा रिटायरमेंट। There is some personal Okay. issues. It was not related with the medical conditions, right? No, like not medical condition. Okay, आपने किसको सीवी भेजा है अपना? मेरे को ना अभी जो कॉपी आया है उसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है,
तो किसी को भेजा है क्या मेल पे आपने? मेल पे हमने भेजा था। एक बार आप भेज दो जिसको भेजा मैं है। आपको फॉरवर्ड करता हाँ, हूँ। एक बार आप फॉरवर्ड कर दो, मैं देख लेता हूँ। बाकी आप लोगों के लाइक ऑफिसर्स, जब तक मैं सीवी देख रहा हूँ इनका, तब तक आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हो जब तक मैं सीवी देख के आ रहा हूँ। If you don't mind, give me a second, please. या श्योर, I needed to drink. Otherwise. नो इश्यूज, आप आराम से पानी पियो। मैं 1 मिनट गो थ्रू कर लेता हूँ सीवी आपका, तब तक आप एक एक करके थोड़ा सवाल पूछना तो पूछ लो। Yeah, comfortable. Are you comfortable? Yeah. So आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताइए आप। Qualification, I was graduation from our क्या बोलते हैं, फायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सेट्रा। क्या मतलब कौन सा कोर्स है? कोर्स इन द सेंस लाइक हम अगर बोलने जाए तो इट्स लाइक मिलिट्री कोर्स आफ्टर लाइक 10th, तब हम लोग ज्वाइन करते हैं मिलिट्री। उस टाइम पे उधर पे हम लोग सर्टिफिकेशन वगैरह सब जहाँ पे हम लोग सीखते हैं वहाँ से मिलता है। वेट, ग्रेजुएशन किस में किया आपने? ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश पे था, बट द मिलिट्री कोर्स वाज फ्रॉम द मिलिट्री में। ग्रेजुएशन किस सर्टिफिकेशन, क्या आपका बैचलर्स किस में करा आपने? वैसे इंग्लिश। बैचलर इन इंग्लिश। या स्ट्रीम का नाम क्या है? सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीम? स्ट्रीम सर इट्स इंग्लिश आई गेस। तो बैचलर्स स्ट्रीम डिग्री आई का नाम डोंट नो इंग्लिश था? द बैचलर डिग्री, या इंग्लिश, बैचलर ऑफ इंग्लिश। ओह, जी, ये पूछ रहा हूँ। सॉरी सॉरी, आई हैव इंग्लिश, बैचलर इन इंग्लिश, या ओके। मास्टर्स होता है इसके बाद, सो आई डिडंट डू मास्टर्स। ठीक है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका मैंने सीवी देखा और मैं खास करके ये देख रहा था कि कहीं पर आपने मेंशन किया है रीजन आपका लास्ट टाइम आपने क्यों छोड़ा था, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आपके सीवी में कि आपने क्यों, रीजन बिकॉज यू ओके, लेफ्ट द मिलिट्री। I'll forward it to you, मतलब जिनको मैंने भेजा था उनको ही भेज दे रहा हूँ आप। ठीक है, गिव मी अ सेकंड सर। या मुझे रीजन जानने हैं फॉर फ्यूचर, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है। मुझे आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल नहीं रहा। बोल नहीं रहा। नहीं, सीवी भेज रहे हैं ना अभी वो। अच्छा अच्छा, मेरे को भी भेजना चाहिए। हाँ, 38 का कॉल आ रहा है काफी टाइम से। 38। कोई नहीं, आने दो, जस्ट इग्नोर अभी के लिए, आई थिंक हाँ वही। सब ठीक हो रहा होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बता भी सकते हैं, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप भेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भेज ही रहे हैं वो शायद। हाँ मतलब इसीलिए मैंने बोला। देख लो रेवरेट सर। यस सर, सेंड इट। हाँ या पे फॉरवर्ड। ओके, तो ये आपके सीवी का पार्ट है,
यस तो सर। ये तो आई थिंक सबको पता है यहाँ पे, क्योंकि सबको सीवी गया हुआ है। तो आई थिंक ये मेंशन करना भूल गए होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली आप मैंने डिस्क्लोज कर मेंशन नहीं सकते किया हो। था। ओके सर। अच्छा, सो आपको मेंशन नहीं करना है क्या? तो मैं नहीं नहीं, दोबारा पूछ मेंशन रहा हूँ लाइक आपसे। दिस दिस इज आवर फैमिली, मतलब अगर कैंसिल सिलेक्टेड राइट हुआ सो प्रमोट। इट्स मतलब हम तो प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, तो हाँ इससे फॉर आपको श्योर। कोई इशू नहीं होगा। ना ना बाकी हम ना। ये इसी डिस्क्लोज नहीं गाड़ी पे है करेंगे टू सर। द पब्लिक फॉर श्योर। फर्स्ट बट हाँ, एक्चुअली अगर हमें सेकंड पता चलेगा प्रोटेक्ट। तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नो नो नो, कंसेंट नो लेने में इशू, पहले। नो इशू। ओके, तो ऑफिसर्स मैं आपको सीवी भेज रहा हूँ इनका। एंड उसके साथ साथ एक रीजन भी भेज रहा हूँ इनका, जो कि इन्होंने मिलिट्री छोड़ा उसका। तो सारी चीजें भेजता हूँ एक सेकंड। So, can I tell you verbally right now, if you guys हाँ, want? तो मुझे ये text करके हाँ वो बता दो आप, और फिर मैं और चीज़ें उससे रिलेटेड Uh, पूछूंगा। so, officer, that I told you कि like I had a mission in Afghanistan. So after ओके। that, जब हम लोगों ने पीडी के साथ जो कोऑप ऑपरेशन किया था, तो उस टाइम पे जो हम लोगों के आर्म माफियाज एक्सेट्रा थे, so they are threatening my family and my loved ones. कोई ले लेना। हेड फॉर गो हाँ हाँ, बोलो। So that's why सर यहाँ पर एक उस टाइम पे मतलब यहाँ like पर एक they are very कार खड़ी है सर, आप hard उसको to इन्फॉर्म कर देंगे take क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है हमें। positive target. कहाँ पर है? बिलवा उसके गेट के जस्ट सामने। आई विल बी रिस्पोंडिंग टू। ऑल्सो थैंक यू। स्विचिंग बैक रेडियो टू 6। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यस। कौन सी गाड़ी थी? कौन सी? आपके किसी डॉक्टर ने बुलाया है, बिकॉज कोई गाड़ी शायद इंपाउंड करानी थी। आ जाइए शायद इधर। हाँ जी। सही है डॉक्टर। भाई साहब अभी जस्ट गए, अभी यहाँ पर एक वो गार्बेज का ट्रक खड़ा था उधर, वो चला गया लेके। हॉट वायर कर रहा था शायद से, वो तारे जोड़ रहा था। चलिए दोनों ठीक है। 3 लोग 4-5 लोग। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, आप ठीक है, लोग हैं हैव अ नाइस डॉक्टर, डे। अभी आप लोग हैं, आप लोग का डिस्टर्ब थोड़ी, कोई बात नहीं नहीं यार, यहाँ पर मतलब पार्किंग की अच्छी सुविधा है, इतनी बड़ी है, पार्किंग है, लेकिन मतलब अभी अंदर ही लगा लोगों है। को जगह थोड़ा जो यहाँ आलस पलटी आता हुई है। थी। कोई आलस तो नहीं हाँ, करना चाहिए ना यार, इतने बड़े हो गए अभी, वही हम कह सीखना रहे हैं, अब पड़ेगा क्या लोगों सब को कुछ। आलस आता है यहाँ तक गाड़ी लाने में, यही बात है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं खैर इमरजेंसी है ठीक है यार, बट फिर भी यार थोड़ा। कोई बात नहीं डॉक्टर, इट्स चलो ओके। थैंक यू आने के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। चलिए, आई विल हैव अ टेक अ नाइस लीव डे। नाउ। यस, हैव अ नाइस डे। पहली गाड़ी लॉक हो गई। डीए आ रहा है। ये आ रहा यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ आपको आ रहा पता है। नहीं है? इस जरा फिर मिल लेते हैं लगे हाथ, और क्या। आ रहे बस बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो निकल गए हैं वहां से, तो मैं एक बार मैसेज कर लूँगा। करिए। क्या मेरा ट्रैकर दिख रहा है यहाँ पे? एक बार चेक कर। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ तो किया है, दिखते आते। यार मुझे मेरा ट्रैकर नहीं दिख रहा। नहीं, खुद का ट्रैकर दिखता है खुद को, ठीक है। खुद का ट्रैकर अच्छा। खुद को नहीं दिखता, ओ, दूसरों को दिखता है।
देखिए जरा कहिए, एक खास ऑफिसर मिलने आया आपसे। हाँ आज डॉक्टर्स भी कम है ना, आज पता नहीं क्यों डॉक्टर्स कम है। तो क्या बात होते है? हैं 5-6 तो। आइए, अब आ गए हैं तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आ जाइए आज। दर्द क्यों हो रहा है बे? योगा करो योगा। क्या? आप लोग कोई दवाई दे दो, डिस्प्रिन दे दो। आ जाओ आ जाओ। वो क्या बोलते हैं, एफटीओ एफटीटी एफटीपी, क्या वो अपॉइंट हो गए ना? यस यस, एफटीओ हो गया। एफटीआई एफटीआई। एफटीपी तो आप में होते हैं। हाँ हाँ नहीं, एफटीओ एफटीओ और एफटीआई कुछ तो हुआ, ऐसा ही होता है। यस। बोर्ड आप भी हो गए उसमें से? नहीं यार, हम नहीं हैं। हमें ओए यार वो इतनी कौन नॉलेज सिंह नहीं है है। ना? यस, हमें इतनी नॉलेज 1 नहीं है। मिनट, भाई 1 मिनट फ्लावर्स में ये आ रहा सब है क्या डीए। है? फ्लावर्स बिकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ वो बिजनेस अभी बट चालू नहीं है। चालू नहीं है? अरे भाई, फूल तो बढ़िया बढ़िया है। 1 मिनट में आ रहा है डीए। अरे हाँ, अंदर सही हो गया सर दर्द। वैसे हाँ मुझे एक बात सुन बताओ कि डीए की पोस्ट बड़ी बहुत बड़ी होती है। फुल बहुत बड़ी होती है। अबे तो उसको सिक्योरिटी कौन देगा? एम, ये भी तो ऐसे ही अपना ठकेला ही है। आई मीन रेपुटेड ही है काफी। अबे अंदर एकदम मक्खन हो गया भाई, अंदर कोई सर दर्द नहीं, बाहर ही हो रहा है। अरे वो क्या बोलते, तो मेरे को लगा तुम लोग उसकी सिक्योरिटी में होगे। नहीं यार, वो नेता आदमी है, बिना सिक्योरिटी के घूमता है वो। पता है तुमको? पता है क्या? तुमको अभी जो तुम्हारे कॉल्स पीडी के कॉल्स है ना, हमको आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अभी कब से हुआ 10:23 का ये? कॉल हुआ है कल से। हाँ, अब क्या ही करें भाई, इसका आ गया क्या लिए? एमटीडी का इशू आ गया रुको। आ गया आ गया आ गया। अच्छा, 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 अच्छा। हेलो 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 ऑफिसर। ऑफिसर अरे ऑफिसर मार्शल लॉ का सही इस्तेमाल। अबे डींडा अंदर, डींडा अंदर। ये कोट पैंट वालों को बहुत मारता हूँ मैं। अच्छा कोट अरे पैंट वालों को ज्यादा हाँ, और अरे तुम्हारी मैं तो नौकरी, अगर तुम्हारी नौकरी मैंने निकाल दी ना, फिर क्या करोगे बताना सर जरा। डंडे डंडे मारूंगा। भाई नाम कैसे क्या है वो ऑफिसर बेटे आपका? डंडे ही बात डंडे ऐसी है कि मारूंगा। तुम बात कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से। अच्छा ओ अरे, पारजी हाँ सर कैसे अरे ये हो? तो अपना डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साहब है। ओ इनके एक बार फीलिंग निकाल के बिना प्राउड मारूंगा। हमें इंडियन क्रिमिनल भी नहीं पकड़ आर्मी, सकते। जंग के मैदान में कदे न देख रहे हो? हार दे। अरे देखो नीचे देखो कर देखो, भाई। डीए बन गया तो भाव नहीं दे रहे, ठीक है भाई। अरे क्या भाव, तूने फोन नहीं लग रहा है भाई, तेरे को अभी तो फोन आया करा मैं, था मैंने। अभी तो आया हाँ मैं। तो फिर क्यों ये क्या? कैसे हो? हाँ भाई, क्या ये डंडा वंडा कैसे निकाल रहे हो तुम, अरे ये अरे डंडा बताओ। कैसे निकाल रहे हो? डंडा अरे कैसे ये निकाल तो रहे हो? केस साला कर देंगे। इसको तो मैं कोई छपरी समझ रहा था, ये तो अपना डीए निकला। साला हे स्ट्राइक पॉइंट डालूंगा सबसे पहले। डालो डालो डालो। अरे स्ट्राइक नहीं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेट कर दो। अबे ये क्या नाम कोई है तुम्हारा? सीनियर और एक मिनट रुके रहो यार, डॉक्टर है क्या? बताओ सिविलियंस बताओ बुला क्या रहे हुआ हैं। सर? इधर सर मिले इधर भाई आई थोड़ा सा आपसे धीरे बोल लो। बात करनी अरे है। बाप रे। अरे ऑफिसर नाम क्या है तुम्हारा? माय सर नेम हम इज, लोग एक कहावत मिनट बात आशी मैम कर दूर रहे हैं। जाइएगा थोड़ा सा, नाम बताना है इन्हें। अरे माय नेम इज ऑफिसर पेनिट्रेशन। ठीक है, कल से काम पे मत आना। बोले सर आपको पेनिट्रेट करके जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैं कर दूंगा पेनिट्रेट, बात ऐसी है। आप मेरे को घर पे भेजो ना, वापस से ड्यूटी ना बुलाना। हाँ अच्छा, सर डंडे लगा के जाऊंगा आपके। लगा के दिखाना जरा। अरे अच्छा देख लो। आशु मैम, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ जी सर। अगर मैं इनको 5 मुक्कों में मार दूं, मतलब मार गिराऊं। तो सर हम आपको गिराएंगे, क्या अरे बात कर रहे हैं? अरे यार, अरे देख वाह। अगर तूने मेरे को पहले मार ही- गिराया तो पक्का कल का दिन तो नहीं देखेगा तू। क्या बात कर रहा है ऐसा? सर कल से आपको पता है ना, इनकी साइन के बगैर आप एक क्रिमिनल नहीं पकड़ सकते। अरे बाप रे, इतनी पावर है क्या? अब वैसे अरे आप अपने को डीए क्लेम कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जी, अटॉर्नी बोल रहे, अब ये नहीं है एग्जैक्टली, तो क्या औकात करूं। में रह के सही से अच्छा बोलिए जी। अच्छा, आपकी क्या रैंक है तेरे सर? क्या designate? सर हम देख पा रहे हैं ऑफिसर आपके पास फुल स्लीव नहीं है। डॉक्टर फुल बढ़िया स्लीव, बढ़िया हाँ जी मैं चिंटू हूँ, हाँ। मतलब सर इनको ठंडी नहीं चिंटू, लगती? यस। चिंटू नहीं कहते, जुगनू कहते हैं। डॉक्टर 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 आने आने इधर। सिविलियंस। हाँ जुगनू का नहीं है। जा रे जुगनू। अरे
देखो ये है डीए साहब, ये है डीए। जा रहे किसको कंप्लेंट करेगा, नहीं नहीं किसको कंप्लेंट मैं करेगा डीए जा। नहीं हूँ, मैं प्राइवेट लॉयर हूँ। ले ये ले। जनरल वार्ड। आशु अच्छा रुक मैम जा, हेलो। देखो काम करने आया हूँ, काम करने के हाँ हाँ, काम काम करने करो जाना काम काम वही करो। कर। वही वही सर। अरे हमको लगा ओरिजिनल डीए आ रहा है, वो भी है क्या, आ रहा है क्या? अरे हाँ, ओरिजिनल डीए भी आ रहा है अभी। अच्छा अच्छा, बुलाओ उसको भी थोड़ा, डंडे हाँ अभी मारो तो उसके। 3 दिन रुक, 3 दिन बाद यही लाइन 10 से पूछूंगा, कम। ओरिजिनल डीए कब आ रहा है। अबे भाई ओके भाई। 3 दिन बाद पूछूंगा तेरे से ये बिल्कुल लाइन में। बिल्कुल, 3 दिन तो और मस्ती मारूंगा। ये इधर यस। संभाल के यूज कीजिए। सर के अरे साथ बिल्कुल आया। सर। हाँ डॉक्टर आप भी कराओ आपके साथ। जी जी अरे चार्ल्स अरे भाई। अरे मत चेक रहिए कर तुझे रहा था, भाई। चेक कर रहा हाँ हाँ। हाँ तो डॉक्टर मेरी आपसे बात हुई थी रिगार्डिंग कि अगर आप लोगों को कुछ स्टेट साइड या फिर मार्शल लॉ की वजह से कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आई एम द गाय यू हैव टू रीच आउट। या आप मीटिंग रूम में चलेंगे कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पे तो या कोई ना कोई आते ही रहेगा। आ तो इट्स जाइए। बेट, आ जाओ आ चलिए जाओ आ डीए जाओ। साहब, आई सर मीन मैं आ एडीए जाऊँ साहब। आप? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। एडीए साहब। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पेनिट्रेशन। सर ऊपर जी आइए। बिल्कुल, हैव अ गुड डे। बाय बाय। बिल्कुल ऑफिसर अब मैं पेनिट्रेशन। सब क्या सस्पेंड हो गया हूँ, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद सस्पेंड मिलूंगा। सस्पेंड, ठीक है ठीक है। यस। कितना ऊपर जाना है सर? कहाँ पर है? क्या क्या भाई, ठुल्ले दाऊद का थंबनेल लगा के ठुल्ला बनना? अबे भाई थंबनेल है नहीं यार, थंबनेल बना दो जरा सा, एक थोड़ा सा। गाड़ी अनलॉक थी भाइयों, थंबनेल बनाना भूल गया, और कोई जल्दी से बना लेता हूँ। इधर बनेगा बढ़िया थंबनेल, खुला। ये है क्या मेरे से बढ़िया? ये रख लेता हूँ। अच्छा व्यू नहीं आ रहा। भाइयों आज स्ट्रीम पे बैठ के हम थंबनेल बनाएंगे। नहीं है होता। क्यों, ये सही है थंबनेल के लिए? दिखना चाहिए पुलिस। हो गया, थंबनेल बनाता हूँ अभी, बंदे से बनवाता हूँ मैं तो। अबे तुम भाई खिलाड़ी आदमी हो। 1 मिनट। भाइयों एक काम है छोटा सा। सोया हुआ है। हाँ भाई बाजी आ गया। तो 1 मिनट भैया, स्ट्रीम म्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए।
यस भाइयों, वेलकम बैक। Truth is is performing code 1. यस, हेलो DSR, गुड इवनिंग। Can you drop me to the LMPS? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस यहाँ से फालतू गाड़ियाँ इंपाउंड कर दूँ एक बार? हाँ जी कर दो। 1 मिनट बस गाइस। अरे सिंगर्स, ये तुम लोग में से किसी की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे? नहीं 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 Impound नहीं मारो। ऑफिसर, मैंने एक देखा कैप वाले बंदे की गाड़ी, कौन सी? उसने व्हाइट और ग्रीन कलर का कैप पहना था। ये तो हमारी गाड़ी है। व्हाइट और ग्रीन कलर का कैप? क्या बोल रहे हो? गाड़ी चलो। व्हाइट और ग्रीन कलर का कैप, ये तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। अरे सर मेरी गाड़ी अरे है। DSR कहाँ कहाँ? सब गाड़ी मत कीजिए, पार्किंग सब से उधर कर लो। हाँ, थोड़ा साइड में कर लो उधर, यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती है ना। आइए DSR। अरे बाप रे, मार डाला। ये सब कहाँ छोड़ना आपको? नाम क्या था? मेरा पेनिट्रेशन। हाँ, तो आपने अपना नाम चेंज नहीं कराया सर मेरे से? अरे पेनी मतलब मेरा निकनेम, आई मीन ये पेनिट्रेशन निकनेम है। सर आपने मुझे LMPS छोड़ना है। LPMS जो भी वो बिल बॉक्स जो है तेरे को वी वो हटिया उड़िए आ रहे हैं। वी सर थोड़ा सा बिहेव। सर मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, DA साहब चल रहे हैं ना गाड़ी। गाड़ी में दिया ना मैं कैसे कोड दिए। अरे DA आ रहे हैं। जी पहुंच गया। थैंक यू। ये जी अपना नंबर तो देते जरा। हाँ, आप मेरे नंबर क्या करेंगे ऑफिसर? हाँ सही बात है, रहने दिए फिर, मत दिए। ले लीजिए। आ गया ना औकात पे। जाइए सर, कॉल करिएगा। DA भाइयों, क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा उड़द काय को? किया ना
होंगे यहाँ आप लोग करवा भाई। ओके बिल्कुल भाई करवा रहा हूँ। ओए क्या बोल रहा है? बोलिए ऑफिसर। कुछ नहीं सर, वो अपने लिए रास्ता बना रहा था और कुछ। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं सर, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत चमका के रखे हैं, अरे वही देख रही थी। ओफो बहुत प्यार करता है लगता है। गाड़ी को। सही है, यस यस। थैंक यू। नहीं नहीं, करनी चाहिए करनी चाहिए, जान से प्यारा लगता है आपका गाड़ी। अरे अरे जान से प्यारा। सही है सही। इनकी नौकरी जाएगी पता है, अगर कोई ये गाड़ी चोरी करके जाएगा तो क्या बात इनकी कर रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ नहीं नौकरी जाएगी, नॉट एग्जैक्टली। 241 1041। अच्छा वो नहीं इतना स्ट्रिक्ट नहीं है क्या डिपार्टमेंट? स्ट्रिक्ट तो मतलब मैं लास्ट टाइम एलएस में था ना तो लॉस एंजलिस में था मैं, तो वहाँ पे तो निकाल ही देते थे। अरे भाई क्या बात है, सही आपके फ्रेंड बुला रहे हैं। जी जी जी। लड़के से पूछ अवैध छूती है, प्रोफेशनल आरपी कर लें दे। वैसे ही एक तो भाई पीडी कैरेक्टर से हल्के में लेता हूँ मैं सबको। भाई एक तो पता नहीं कैसे आई की आँख फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं बहुत तगड़े। अब तो स्नो भी नहीं है, अब क्या एक्सक्यूज दूंगा। पीसी सस्ता है यही। अबे प्रोफेशनल भाई करना पड़ता है भाई, मजबूरी। देखो माँ भाई ले बोल देना पीएल इशू भाई, इन गेम तो पीएल इशू बोल रहे हैं। अरे माँ क्या आया क्या इंटरव्यू के लिए? आओ इसका इंटरव्यू लेंगे। हेलो जॉर्ज ब्राउन का इंटरव्यू। भाई तुम्हारे सारे मैसेजेस बनना बार बार उसमें जा रहे हैं, गाली मत दे चैट में साले। क्या बी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल, डोंट बी टॉक्सिक। मैं ठुल्ला होता तो देखता तो सीनियर ऑफिसर है। नहीं सर, अरे हाँ सारा डीकल्स भी नहीं सही करे। तुमको भी जाना है उधर? मतलब एक की पूरा गाफ मारने लगे हो क्या तुम लोग? अभी तक ले रहे हैं क्या इंटरव्यू ये लोग उसका? एक और शायद अबे नीचे वो आ रहा सब है। छोड़ो, देखो देखो देखो, इतने जाओ लोग- जाओ जाओ, जॉर्ज ब्राउन को एस्कॉर्ट कर लो भाई, मैं उसके पास नहीं जा जाता, तुम कर लो। वो तो कर लूंगा, बट एक चीज बताओ, एक आदमी के लिए इतना लोग लगते हैं थोड़ी इंटरव्यू पैनल अरे में। फुल भाई फुल सपोर्ट कर रहा हूँ उसको। चलो चलो अच्छा उसको ले आओ, थोड़ा वो दिमाग चढ़ जाएगा इसलिए। हाँ हाँ जा हुआ आदि सर। बताओ। मैं बोल रहा हूँ एक लोग ओके सर, होपफुली सर जल्दी मिले आपके साथ। आते हैं सर। भाइयों भाइयों आते हैं सर। अगला लौंडा पता है कौन आ रहा है? जॉर्ज ब्राउन आ रहा है। अरे सुखविंदर सर एक बात बताओ हाँ कि आप 3 या 4 को रख लो, ये पूरा पीडी डिपार्टमेंट अगर एक लोगों का मैं थोड़ा इंटरव्यू लेट आया ना, इस बात में पूरा डिपार्टमेंट ज्यादा ही खड़ा था, लाइक मेरे को भी वही फील हुआ कि कुछ ज्यादा ही ऐसा नहीं लोग होना बात है, चाहिए, फिर इसीलिए तो तो मैंने सामने लीव वाला कर बंदा दिया। सोचेगा ये कैसा लेकिन नहीं चल नहीं, रहा है अब तो जॉर्ज ब्राउन नहीं आ रहा है, अब नहीं, तो और जिसने ऑफिसर्स सोचा को कोई बुलाओ। दिक्कत नहीं है, बट ठीक है मैं लेट आया था तो मैं भाइयों किसी को ये 4 नहीं लोग बोल लो सकता। यार, बाकी लोग ड्यूटी व्यूटी भी करो, थोड़ा सिटी में क्राइम अरे भी रोकना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉर्ज ब्राउन के इंटरव्यू के बाद मैं तो जा रहा हूँ भाई, मेरे को कोई ऐसा भाई तुम भी आओ, जॉर्ज नहीं ब्राउन का देखता तो इंटरव्यू। इंटरव्यू आ जाओ गैरी भाई। अरे मेरे को एक चीज बताओ सुखविंदर सर, हम्म, ठीक है कैडेट्स लेना है? भाई वो हाँ जिनका एक्सपेक्टेड ही एक्सपीरियंस नहीं नहीं है था, तो तो फिर देखो लेने वही पड़ेगा। कोई नहीं, अब उसका एफटीओ भी तो है हमारे पास। वो अब इसका क्या हुआ, एफटीओ का काम बैचलर आ इन गया इंग्लिश वाले का? अरे बैचलर हाँ ऑफ ठीक है, इंग्लिश क्रेडिट वाले ही है का वो तो, पीडी का कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ नहीं पता उन्हें। मिलिट्री बैकग्राउंड से आया है बट बोल रहा है वो। बैचलर इन इंग्लिश भाई
वो थोड़ा ठीक अजीब है, सा अच्छी कोर्स बात है। था, लेकिन ठीक है। ठीक है, चलेगा। सहना पड़ेगा। इंग्लिश रहना चलेगा। पड़ेगा। शायद अफगानिस्तान में से कुछ होता हो। अरे भाई यार। उसका ए, मेडिकल साला सर्टिफिकेट दिया था किसी मुझे ने? थोड़ा पता है भाई। मैंने सीवी तो लिया था। सीवी तो दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट है मेडिकल उसका? सर्टिफिकेट किसने लिया था? बाद में ले लेंगे, क्या हो नहीं गया। नहीं, उससे पूछ रहा था तो ले चलो कोई लेंगे नहीं। ले लेंगे, कोई नहीं। वैसे तो वही मेंशन नहीं बात है किया सर। था शायद। हाँ, आप फिर कितने लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं ऐसे मुझे एक चीज बताओ, गैरी चल क्योंकि रहे हो? ज्यादा चलो है, बहुत चलो। ज्यादा है। हाँ, मैं और गैरी जा रहे हैं। मैं 3 ही चाहता हूँ यहाँ पे। तो हम हाँ, भी नो चलते हैं वरीज। फिर, चलो। या तो डिवाइड कर लो फिर। अबे वो कौन से दो ऑफिसर दो हैं ले लो। टोपी वाले? दूसरे साहब। आओ तो अपन चलो। फ्रैंक है। फ्रैंक, ओके। चल जा। और आओ हम फ्रैंक भी सर चलते आए। हैं। कैसे हो फ्रैंक सर? फ्रैंक सर ऑफिसर बोल रहे व्हाट्सअप। थे जॉर्ज ब्राउन है, कहाँ पे बढ़िया हो? है, बढ़िया है। मेरी आजा रैट्स रास्ते देखोगे में। आप लोग? हाँ। नहीं नहीं। क्या तुम मेरे दिखाओगे एक साथ भाई, ही झापड़ है बहुत वो गंदी खाओगे? गंदी चीजें। नहीं नहीं, गुस्सा मेरे अंदर गुस्सा झापड़ भरा हुआ है। खाओगे? मेरे अंदर ऐसी गुस्सा गंदी भरा। गंदी चीजें दिखाते हो भाई। जिन लोगों की नीड नहीं है आ जाओ, थोड़ा कोडर बिल्कुल वोडर। सर, 10-4 सर। अरे भाई, अरे मैं भी फेल था। अगर उसको पीडी बोलता ना कि भाई मैं पीडी का बहुत नॉलेज है, भाई फिर मैं एक्सपीरियंस फेल होता था ना उसको। ऐसे कुछ। ये देखो जॉर्ज सर। और क्या चल रहा है बताओ? अब आएगा। अब आएगा मजा, हलाल होने जा रहे हैं। हेलो भाइयों। पोज वन, अरे पोज आप वन। कहाँ रहे हो ये? अरे क्यों भाई? हम आके किसी पढ़ो। काम से जा रहे हैं। तो तू ऋत्विक के अबे साथ चले जाना फिर भाई। से नहीं भाई, नहीं, मैं ऋत्विक जा जाएगा रहा ना हूँ। प्लीज। फिर मैं जा रहा हूँ ऋत्विक वहाँ के पर साथ चले इंटरव्यू जाना। पास। जाओ जाओ इंटरव्यू। क्यों बे दिल्ली ट्रेशन? क्या रे? बेरोजगार? क्या कर रहे हो दिल्ली ट्रेशन? बिजी हैं काम में, जोब कर रहे हैं, जोब। अच्छा जॉब कर रहे हो। जोब। उठा यस। नहीं रहे हो आजकल तुम अपने? चुप सारे छक्के कलवे। अबे अपने अपर हेड के उठा नहीं रहे कि तुम्हें प्रमोशन दे? आटे पड़ेंगे ना। क्या काट दिए हैं उसके? जी सर, जी सर, मीटिंग में आते हैं सर। हाँ। अच्छा चलें ठीक। बुला दूं क्या अगले? हाँ बुझा जॉर्ज, दो, बिल्कुल। बुला दो। इतने बंदे बाकी जो ज्यादा से नहीं लग रहे क्या? अब तो कम हो गए। रेप भाई, पीने के लिए कुछ है तो दे दो। आएगा आपके पास? नहीं आया? बाकी जितने ऑफिसर्स हो आप लोग कोड 1 रिज्यूम कर लो। मैं नीचे रख रहा हूँ। हाँ हेलो। अभी भी ज्यादा ही लग रहे हैं मुझे। थैंक यू। फिर हम ज्यादा हो गए। मैं जा रहा हूँ थोड़ी। हाँ हो जाओ, कोई नहीं। जा रहा हो के बीच में खड़े हो गए। अरे मैं आदि कंटिन्यू। पटेल। जी सर। अरे तो आप चलो मत तुम मत लीड करो। बीच में, आप कोई नहीं, बीच तुम लीड बीच करो, हाँ। तुम लीड करो। ओके, दिस जाओ साइड जाओ, ऑफिसर आदित्य पटेल। बीच में जाओ, तुम यस। लीड करो। अब तो आदि लीड करेगा। हमारे एक सेकंड। ठीक है सर, आ जाओ आराम से, एक एक करके। ओके, दिस इज फिर दिस। से इतने सारे अंदर आ गए। अभी के लिए छोड़ देते हैं, आ जाओ आप। नहीं नहीं, बाहर आओ, 2 ऑफिसर्स जितने भी हो। वो लोग भी भागने जा रहे हैं। यही तीन तो बहुत है, है, तीन पर है ना? अरे मुझे रहना है इस इंटरव्यू में, मुझे रहने देना। जाओ इस भाई। जा इंटरव्यू जा में क्यों? अच्छे तुम जा। जानते हो जॉर्ज ब्राउन को पहले से? मैं जानता हूँ। फन में हाँ जानते हो। मैं तो मिला था ना सिटी में उनको अच्छा, सिटी में पहले एक मिलके बार। ऐसा क्या दिखा दिया जो तुम्हें इनके इंटरव्यू में इतना इंटरेस्ट है? मैं देखा हूँ, ये कॉप है यूके में, हाँ वहाँ से ट्रांसफर हाँ। ले रहा है। अच्छा, बहुत पता है तुम्हें। हाँ। भाई ये मानते नहीं हो भाई, फिर मैं क्या 241 बोलूँ? प्लस फिर 2 सब आ कोडर। जाओ जिसको आना है, मैं सबको थोड़ी ना मना करता रहूँगा। अरे ठीक, क्या दिक्कत? मैं जा रहा नहीं हूँ होता। कोडर, ठीक है बेसिक। नहीं नहीं, आ जाओ तुम, कोई नहीं। ओम्फो। Community oriented policing works, as we known as COP. So that's how I served. That's how I have started my career. ओके। So first of all, we'll start with our introduction from our side. So myself, Frank Rubio, senior Right. officer. Right. On my right is Adi Patel, officer. On my left is Sukhvinder Singh. He is also senior officer and HR of our department. Then on the left of him is Rav Dart. He is also senior officer. And yeah, Baki officers, please introduce yourself as well. Yes, my name is Officer Jason. And my name is All right. Officer Jasper Miles. Right. Thank you very much, gents. You're welcome. Okay, can you send me your CV and
whatever you got. CV, right? Only CV? Also medical certificate if you have. All right, yeah, I got it. Just call. Yeah, please send to anybody, any one of the officer. Anybody means whom? If you can tell me Anyone who precisely. is मुझे okay, भेज just दो कोई नहीं send to Mini Devil mail ID. सुखविंदर सर minidevil@discord.com। थोड़ा सा कैजुअल था बट ठीक है मैं कर रहा हूँ एक मिनट। हाँ चलेगा इतना कुछ। मेरा CV भेजा है आपको। मीना को मैं भेज रहा हूँ मैं मेडिकल सर्टिफिकेट। Okay. दोनों मैंने भेज दिया है। Nine 10 7 forward. सीवी नहीं खुल रहा पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं मैं देखता हूँ। नहीं खुल रहा CV? नहीं कोई इशू नहीं है वो बाद में देखते हैं। ओके आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस ही कर दो। करता हूँ। एक जो भी सीवी में आपने मेंशन किया है जो भी मेन पॉइंट्स हैं सबको पता चल जाएगा उससे। ठीक है एक मिनट मैं कर देता हूँ आपको। So basically, as I explained you before, I started my career in the academy, and then I currently have over 6 years of experience. And basically, I'll be explaining myself what I have done within that tenure. Okay. उसमें मैंने mention किया CV पे कि I basically I have been recognized for the leadership and the professionalism with the understanding of the community-oriented policing and their procedures and their communication protocols, how it works, and how to coordinate within the officers within the department in regards of the dealing with the high pressure situations where we have where we have higher intensity than the other. Okay. And also, I have mentioned the achievements, or rather, I would say what I've done. To be honest, one of the department I've been promoted to the under sheriff, and I've been worked with the SWAT team, which means basically the special weapons and tactics, which basically leads within the integral part of the law enforcement division, or rather in department. And during the tenure of the sergeant, I was responsible for the issuance of the certifications, or rather, I would say recommendations for the certifications of the different sub departments. If I'm talking about the K9 and then the Air 1 division, I mean subdivision, and the other ones such as the speed enforcement and so, you know. Okay. I was also I was also a SWAT officer, as I mentioned, and particularly the SWAT lead. During that time, I have been involved within several tactical operations, including high risk felony stops and the traffic stops, and in other different SWAT deployments.
which requires the strict adherence and of course following the chain of command from all through. And also I have mentioned my like particular skills such as the field training and mentoring the cadets who joins the department as I mean in the academy basically, you know, and other leadership roles. That's it. Okay, good to hear that you have so much experience of law and you have served 6 years, right? Yeah, over 6 years in Okay, different so departments to be what honest. was your last post and why you resigned from that? Why I resigned? Because the thing is, as I'll tell you, my personal basically I mean history of my life. So if I show my ID card, you will notice that I am currently in the LS, that is US, but I am a citizen also of United Kingdom. Okay. And I'll explain you why. So I was born here, but I have been born and brought up in the UK. And now I'm back into my home country where I mean, basically, I was born here and I have been brought up in the UK. So I'm back in my birthplace. That's it. Okay. So is there any any major reason because you came back? Yeah, I mean, to be honest, there shouldn't be any more particular reason than the birthplace. So that's why I'm here. This is my birthplace. That's the most important reason, to be honest, to serve my own, I mean, country of birth. Okay, I'm asking this because you have taken the citizenship of UK Yeah, because you have joined the PD there as well. yes, yes, So after exactly. that, you have left that citizenship and you applied for the US again, right? Yes. So that's why I'm asking. Well, the thing is, UK and US accepts both dual citizenship, and if I'm talking about the country of birth, I would rather explore greener pastures from the United Kingdom. That's it. I mean, to be honest, the only reason for transfer is basically I've explored a lot of things in that particular jurisdiction, and I want to explore further. That's why. Okay. So you have a great experience. So we are going to ask questions according to your Yeah. experience only. So we will start with the basic questions. You know about Actually, I wanted to ask before we start, can I ask you one thing, please? Yeah, sure. Okay, so if I may ask, although I'm not particularly mentioning it, but still, if I'm applying for the department, which rank will I be getting? Or is there anything, or rather, if I prove myself in the interview that I'm capable of higher ranks, will I be allotted for it? Yes, the decision will be taken by the high commands and All right, obviously the HRs. So perfect. Yeah. it will be based on your interview only. All right, got it. Perfect. Thank you. Yeah, we Okay, can so we can begin I'll it now. start with the basic questions. Yes. So what do you know about probable cause and reasonable suspicion? Right. So probable cause is basically, yeah. हाँ, you carry on. मैं आता हूँ एक मिनट. Hello. All right. Basically, probable cause is, probable cause are the original facts or the factual evidences that we can put in the court for, let's say, for processing the charge sheets and the further execution of arrest warrants. And the reasonable suspicion is basically the belief that a crime might or will take place based on the facts. Any particular example? Example, yes, definitely. So let's say we are chasing a suspect who was fleeing from an armed robbery situation. That particular suspect wearing the particular outfits would be the probable cause, and that particular suspect will be charged for reckless evading. Now this charge is the probable cause because we have seen him
and that is the factual evidences. We have evidences for pressing charges on him. And if you ask me about the reasonable suspicion, now let's say on the very same example, the suspect has got the visual contact broken. That particular guy, maybe we got a hint, or maybe an intel, that this particular guy is in the clothing store changing their outfits, and we are not sure if he's the one or not. That will be a reasonable suspicion, and depends upon the probable cause, we can further process the suspects according to the charges, but we cannot. We need to investigate more to get a probable cause. Okay. Sorry, I've got a call. It was an important call. DA का That's कॉल fine. था सुखविंदर से, मेरे को जरा नीचे उनसे मिलके आना है, कुछ इम्पोर्टेंट है। Okay. आप लोग कैरी ऑन करो, मैं जी। आता हूँ अभी। Prank, you can take over for now. Okay, no worries. I'll go with the next question. So, Yes. are you familiar with the chain of command hierarchy and the code of conduct? Definitely. Yeah, please go with the basic definition of both and how it is implemented in the PD police department. Right. So, as you asked me the chain of command first, chain of command is basically a structured hierarchy that we follow, which defines as well the complete the ranks and the responsibilities for, like, let's say, transmitting orders and the disciplinary actions or whatever from the higher ranking officials to the lower ranking officials or the personnel in the department. Okay, so And can you tell me that entire chain from lowest to highest, the hierarchy? okay, yes, definitely. So basically, I'll start from the chief of the department, and there can be different subdivisions, I would say. I mean, Just go with the basics. yeah. It's totally fine. Yeah. Okay, so chief, then deputy chief, then the commanders, and then the captain, lieutenant, sergeant, and then the patrol officers, who are the senior officers, and then the probation period officers, that are the cadets, solo cadets, and so on. And yes, the next question was the code of conduct. Right. The code of conduct is basically an established, I would say, hypothetical theory, which basically provides us the ethical standards that we should follow and the professional expectations from a law enforcement officer. Okay. So, can you give me an example of a situation where, like, a code of conduct has been followed and where it has not been followed? Can you give me one Yes, example definitely. of each? Yeah, definitely. Misbehaving with a civilian in any situation, any given situation, would be a code of conduct break, or also at the same time maintaining a proper discipline in the police radio is a appreciating thing for a law enforcement officer, which makes sure that the code of conduct is followed, and also in case of the misbehaving with a civilian in any given situation can be against the officer in regards to the code of conduct. Okay. And okay, so like you said about like how it is used, but I'm asking you for an example, basically a situation where code of conduct is broken, or where it is preserved, the code of conduct is preserved. Can you Yeah. give me one example of it so that I can get a better understanding of how yes, much of a understanding you are having on Mhm. the like code of conduct and how to maintain it? I mean, code of conduct is basically making sure that Just I give me mean an the example. Definition, I know that example you know it. example is basically that's what I gave you. The let's say if an officer misbehaves with a civilian in any given situation, which does not shows the professionalism and the expectation from a law enforcement officer, is basically breaking this code of conduct. Okay. And preserving it is, let's say if I'm maintaining a proper decorum in the police radio during a situation, is basically preserving in the code of conduct. And
let's say, maintaining the basic standards, how a cop should work. That's it. Yeah. Okay. Okay, that's fine. I'll just go with the next question. So, do you know what are the types of forces in law enforcement? Forces, you mean? Do you mean the use of force, the level of force exactly? The types of forces that a keeping officer can use. If you're talking about the level of force that we use, is basically the first. Sorry. Yeah, go ahead. Yeah, that's why I'm asking the levels of forces or types of forces. So basically, we use force depend upon situations, and the first one would be the officer's presence, the first contact in regards to any situation, and then the verbal commands. Verbal commands means the lawful commands for asking, let's say, for a registration of the vehicle during a traffic stop. The next one would be using force of our own body, let's say the bodily strength, uh, let's say the tackles and everything. Then the less lethals, those are basically the tasers or can be batons, just to immobilize, which should not cause serious harm. And then the lethals, which can involve the neutralizing suspect in terms of like shooting them down. Okay, so I'll give you two things. One would be a baton, and three things. One would be a tackle, one would be a baton, and one would be a taser. So can you classify depending on the category or the levels it will fall under? Tackle, taser, and batons, right? Right. Right. So as I mentioned, the tasers and batons would be on the less lethal force, and the that means the fourth level, and the third level would be the bodily force of our own strength, the tackles and everything. Okay, so you mean to say tackle is bodily force, and so you are saying that there are 5 levels of forces, right? Yes. Okay, fine. Okay, so I'll just go with the next question. So are you aware of the for escalation of force and the match of force, the concept of this? Definitely, yes. I'll just go ahead with it. So as I mentioned, escalation of force. Basically, yeah, the escalation of force is let's say a structured or a framework that helps the law enforcement officers, or rather guides them in selecting the appropriate level of force that needs to be used in a situation in any given point of time. Also, in response to the crime that has been committed, in the the criminal offense that has been that has been made against the state or whatever it is. Which we basically, the reason for using this is to resolve the situation, or rather neutralize the situation with the minimum necessary force applicable in the given scenario. Okay. Are you aware of detain and arrest? Definitely. Yes. So can you tell me in which situations do we detain a suspect, and in which situations do we arrest him? Yes. So as I mentioned at the very first, you asked me. Gentlemen have asked me. Tell me about the probable cause and assumed suspicion. That's exactly what I'm going to be referencing here. Arrest can be done only in case of probable cause. When we have probable cause, detain can be done only during the resumed suspicion. We need to investigate further in order to get a probable cause. That's how I will differentiate to you. Are you aware of the bail policies? Do you know the concept of bail policies? Bail policies, yes. Yeah, right. Yeah, just tell me about the bail policies, and what are the terms on which we can grant a bail to a suspect? Right. So while I'm explaining this, the bail policies and all, I'll be mentioning here that there are different kind of charges that we can or cannot grant bails to the suspects. So let's say I'm talking about the charges, particularly the type of charges, particularly infraction, misdemeanor, felony, and the held until trial, the HUT. So in case of HUT, we cannot give a bail to suspect. That means they will be in the judicial custody until a bench trial has been done.
And also, in case of misdemeanor, the second one that I mentioned, we can actually grant them bails because those are the crimes. So definitely, they are both. All of them are crimes that has been committed, but the seriousness of the crime here makes the point, which differentiates that which one will be bailable and which are the non-bailable. Okay, and what is the what is the procedure of I mean the what are the terms on which you can grant a bail? Like if you are granting a bail to a suspect, so what Yes. would be the terms or what would be the procedure that we need to follow officially and before granting him the bail? Right. It depends upon the constitution, to be honest, how it has been made. But by default, I can tell you. Firstly, if the firstly, the attorney will be coming at these cells, and they will be having a discussion No, I'm not on asking the. about the procedure. I'm asking about the terms that we need to follow. Like there are some guidelines, right? That we might need to do some paperwork. So might need to make some fines and stuff. So I want to know about Yes. those. Yeah. Right. So, till I'm aware of the procedure, if I can mention, the charges will be mentioned within the bail, and it can depend upon different departments. What I'm aware of is the bail amount will be the triple for the fines, and then the bail amount should be paid, and the attorney will be taken care of on behalf of the suspect and will be taken out from the custody. Okay. And what would be the minimum like or the fixed fine? Is it a fixed or minimum? Just tell me that and tell me how much is it that we need to charge from him for Okay. granting a bail. Okay. Basically, the bail amount. That's it. The bail amount that we. Right. The bail amount needs to be paid, or whatever like the charges are. The bail amount needs to be paid, and the attorney will be taking him out on So behalf of the suspect. what is the bail amount? That's what I'm asking you. Like what is the criteria of calculating the bail amount? Well, as far as I'm aware with that, the charges that has been praised, the suspect will be the triple of these charges. That will be similar to the bail amount. So let's say there are three charges which amounts to $10,000. That will be thrice of it. The $30,000 will be the bail amount that needs to be paid, and then the attorney can actually take him out. Is it Behalf of. refundable or non-refundable if he wins the case in the court? Well, to be honest, it's blindly refundable as the moment the bench trial is been done and the person has been released, the court decides whether the bail amount is refundable or not, and also with the any compensation after the end of the bench trial as well. Okay. So I'll go the next question. So you have told Yes. me about the felony stop, right? Or Yes. the felony crimes. So Yes. I Yes. want to know like what are the different types of crimes and how and on what like affinity you would classify those crimes under those categories. Uh, well, I mentioned about the. Okay, got it. So, you mean, how do you want me to explain it? Like the If you type can of tell. the crimes, what are the different types of the crimes or the how the crimes are classified into different categories and like yeah like on what affinity those crimes are like classified on those categories. Well, I can understand the question, but at the I can same explain you time, in a better way. yeah, please, yeah. Like basically, there are crimes like a traffic stop as well. There is a felony stop as well. There is a reckless evading as well, for example. So how Yes. will you classify those crimes into different levels? And what are the all types of crime, like levels of crimes? I mean to say. Well, I think I mentioned there are like infraction, misdemeanor, felony, and HRP. Yes, so you mentioned that, but I want to know Yes. that how they are, like how the crimes are classified into those four categories. Well, to be honest, it depends upon the penal code completely. The penal codes which have been included as a document to us, that it depends completely upon the penal codes. To be honest. Yeah, so like I mentioned you about the four crimes now, so just classify it according to the order, like I said.
about like the traffic stop, the felony stop, the reckless evading, and a hostage situation. Just classify it. And Okay. So basically, the traffic stop would be the infractions, Mhm. and then the hostage taking would be the felony crime. Mhm. All right, and I think you mentioned one more offense. I mean, the cognizable offense that you mentioned. I think there is one more. Can you repeat that once again? Yes, I told you about a felony stop, a traffic stop, a hostage situation, right, and a reckless evading. All right. So the traffic stop would be the infraction. Hostage taking would be on the felony crime, Mhm. and the other one you mentioned, the felony stop. That is definitely a felony crime because, of course, there is a felon inside the vehicle. And the other one was a reckless evading. Now this can be a misdemeanor one, and also can be a felony. Depends upon the situation. Right. And if it's a hostage situation, and if Yes. it is from a bank robbery, Yes. then what will it be in the same felony, or it would be in a higher or a lower? Well, I would say hostage taking, you until and unless if it's a mass hostage taking, I would consider it as a felony crime. Otherwise, if it's a mass hostage taking, let's say in the hospital area or some anywhere, it will be considered as a HUT. That means held until trial, until the bench trial. Okay, right. So can you give me three types of just give me any three crimes that comes under HUT? 3 crimes. Okay. Mass hostage taking, as I mentioned already. Just exclude that Then, one. Yeah, just exclude okay. the other three. Yeah. Let's say terrorism, Mhm. right? And then I would suggest the hostage taking of any higher ranking government officials. Let's say, I mean, to be honest, I can mention an easy one. That would be, let's say, I have heard that the governor is missing. So kidnapping of a government or a higher official government employee would be an HUT. Mhm. And also mass killing anywhere would be considered as a HUT. So that would be falling under terrorist attack, right? Like you said. Well, it depends, to be honest. And also, let's say mass killing inside the prison can also be an HUT. So let's say someone trying to break the prison through the mass killing will be an HUT as well. So it depends how mass killing has been done. Or 67A and 67B. Well, 67 or number 67A. Well, I'm 67. I'm aware of that. The call sign 67 is basically the carjacking. Yes, carjacking or 67A government carjacking. Right. So, if I'm mentioning about the government vehicular carjacking or whatever it is, and the normal carjacking, both will be considered as within the felony crimes. Okay, I'll just be clearing one thing. 67 is not only government. It's for like high value vehicles. Basically, it can be of any high profile civilian or a like high value vehicle that is being All right. tampered with. So it comes under 67A. All right. Got it. Yes. And also like 67B is a misdemeanor crime, not a felony. All right. Got it. Okay, I'll go with the next question. Yeah. So basically, if I would ask you about, for instance, if I would ask you about the different types of warrants, can you tell Oh, me yeah. like how many are there and what are they? Right. I can mention a few. That is going to be the first. The common one, arrest warrants. And then there would be search and seizure warrant. And then the raid warrants and the investigation warrant. These all are the types of warrants that can be done through the law enforcement officials. And there I can mention a few more that can be issued by the governor, and so that can be, let's say, an execution warrant that will be completely under the sole decision of the governor or the, let's say, the chairperson of the whole city. So you meant to say warrant like kill on site warrant? No, the execution warrant. Okay.
basically what I'm trying to say is kill on site can be a different thing. Kill on site can be a same. I mean, to be honest, I wouldn't say that it's both are same. Exhibition warrant basically a exhibition of a person within a particular cell, and that's considered to be the highest, to be honest, and that can be only that is issued. now it has been renamed to capital punishment. Yeah. Just So apart from that, within the law enforcement division, we only use like mostly arrest, search and seizure, raid, and investigation warrant. Okay. And can these warrants be issued by police high commands, or it has to be approved by the Department of Justice? I can tell you this because in my two different other departments, I would mention, I have experienced that the arrest warrants or the warrants can be issued by the high commands, and also at the same time, I have experienced within the tenure that those are particularly issued by the Department of Justice to avoid the biasness. Okay, so you mean to say it depends? Yes, of course. Okay. Can you tell me about what is the difference between bona fide and non-bona fide evidences? Right. And also after this, tell me about remand as well. Yeah. Okay. So basically, let's say if I'm talking about the bona fide and non-bona fide evidences, bona fide evidences are the particular evidences those can be used in the court during the bench trial. Let's say the bullet casings, then DNA samples, bullet projectiles, any particular concealed weapons that has been acquired from the crime scene. Then, as we all are carrying government ID cards, any governmental documents such as let's say birth certificates or anything, and then also that we use mostly the camera evidences. Those are all the bona fide evidences. And apart from that, let's say any camera footages, if considered, I would mention are the bona fide evidences. And if I mention about the non-bona fides, all of them will be considered as a non-bona fide. Okay, so like now I asked you both the questions together because there is a correlation with each of the questions. That's the reason I asked. So now just tell me about the remand thing, and why and when does the police officers ask for the remand of a the custody remand or custody of a suspect? Custody of suspect. Sir, Joyla Santo, sir. Sir, I just came for an interview. आप यहाँ पर वेट करिए, मैं बात करके 10-4. Okay, sir. बताइएगा। Dexter Neil. Dexter Neil. Sorry. Let me show my ID card. It is my ID card. Dexter Neil. 10-4. All the other parties included. Okay, and tell me. কি হলো? Dexter Morgan.
बस हो गया इनका, 5 मिनट में निपटा रहे हैं इनका, फिर भी ला लेंगे। हाँ यहीं पे ले आओ और क्या। जो जो If it has a ठीक ठीक special ठीक। circumstances, it depends. ओके सर वो शायद खुला रह गया गेट। ओके 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 सर। Thank you for your service.